के बाद अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। तो शाफ्ट में सबसे पहले 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस होंगे, और यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर्स की। सबसे पहला एंटीरियर बॉर्डर है। तो आप देख रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर जो है वो रेडियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होगा, मतलब रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर मार्जिन से स्टार्ट होगा एंड स्टाइलोइड प्रोसेस तक ये जाता है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं दिस इज द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस। तो ये वाला जो आपका बॉर्डर है दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस। It starts from the anterior margin of the radial tuberosity and then goes to the styloid process. अगर हम अपर हाफ इसका देखते हैं तो ये ऑब्लिकली रन कर रहा है, लेकिन लोअर हाफ में ये वर्टिकली रन करता है। तो जो ये ऑब्लिकली रन कर रहा है इसे हम एंटीरियर ऑब्लिक लाइन कहते हैं। दिस इज द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर again starts from the radial tuberosity but on its posterior inferior part। तो अब जब इसका posterior inferior part देखते हैं, ये posterior inferior part से start हो रहा है and then it goes to the lower end and this tubercle। So this is the posterior border of this radius। Posterior border starts from this posterior inferior margin of this radial tuberosity and then goes to the tubercle, which is situated on the posterior aspect of the lower end। Again third is the, and yes, this oblique line again called the posterior oblique line। If it is situated anterior border or anteriorly, that is called the anterior oblique line, and if it's situated into the on the posterior aspect or on the posterior border, that is called the posterior oblique line। Next is the medial border। So medial border also called the introosseous border। This is the medial border। Medial border again starts from the inferior posterior part, posterior inferior part of this radial tuberosity and then goes to the ulnar notch. So this is the ulnar notch and this is the posterior aspect of the ulnar notch। So this border is starts from the posterior inferior part margin of the radial tuberosity and then goes to the posterior part of this radial notch। So these are the three important borders of radius. One is anterior, one is posterior, and one is medial and also called the introosseous border। Next अब हम बात करते हैं सरफेसेस। तो रेडियस पे आपको 3 सरफेस जो है बेसिकली पाए जाते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। दिस इज द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। एंड देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो हमारे पास वहां 3 बॉर्डर्स रहते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर और इंट्रोसियस। लेकिन जब सरफेस की बात कर रहे हैं तो एंटीरियर है, पोस्टीरियर बट लेटरल सरफेस। तो एक एक सरफेस की हम बात करते हैं। वन इज एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इज सिचुएटेड between the anterior border and the medial border। So this is the anterior border and this is the medial or introosseous border। So this surface is known as anterior surface। Posterior surface is situated between the posterior and the medial border। So this one is the medial border and this one is the posterior border। So this surface is known as posterior surface and the surface situated between the anterior border and the posterior border is known as the lateral surface। So in this radius there are 3 important surfaces, one is anterior, one is posterior and one is lateral surface।